Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So today we'll see a topic like relation between igneous rock and ore deposit. Okay, and then we'll see a small topic which is the Pathfinder elements, or sometimes we call it as an indicator. Okay, so previously we have discussed metallogenetic epoch, metallogenetic province, then additionally we have covered the control of ore localization. So after that we are proceeding towards the individual mineral deposit, but before that we need to understand these things, because when we are going to study individual deposits like iron, copper, chromite, okay, so in that you will see in the origin of those minerals there is a certain relation between the igneous intrusion and ore deposit, which we have seen in the metallogenetic province and control of ore localization. Somehow we have seen the concept where we have seen the different kind of igneous rock, how they are accumulated, or how the different kind of ore deposits are associated with different kind of igneous rocks. So we'll discuss those things. The topic is broadly called relation between igneous rock and ores. Okay, so within that we'll see. Uh, let's come to the introduction part. So we know there is a certain relation between igneous rock and ores, which we are talking about, or which we are concerning for the ore only. We are studying the economic geology. Okay, so what is that relation? Actually, this relation is called a genetic relation. Means during the sorry sorry, during the formation of igneous rock, you are getting a certain type of ore deposit associated with that particular rock. Means if you have a rock like granite, you will get tin, tungsten type of rock. If you have the ultra basic rock or ultra mafic rock, you will get chromite and diamond, these type of minerals. So that means there is a certain relation in between the source of magma, or the rock which is depositing, and associated with the ores. Okay, some ores are always find with the particular igneous rock. तो यही यही वो कैच कि पर्टिकुलर igneous rock के साथ ही आपको कुछ पर्टिकुलर और ही दिखेंगे. ठीक है, मीन्स अगर मैं बोल सकता हूँ, सपोज देयर इज अ रॉक ए, देयर इज अ रॉक बी, देयर इज अ रॉक सी. So always you will get with rock A you will get mineral P, rock B mineral Q, rock C mineral R. So this relation is like uh, we are considering it as a ideal condition. Why? Because many times, एक बार नहीं बहुत बार हमें ये एसोसिएशन मिला है पर्टिकुलर रॉक के साथ उसी पर्टिकुलर मिनरल का. सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट. ओके, सो इग्नियस इंट्रूजन हेल्प इन द लोकलाइजेशन. अच्छा, इसको जेड कर लेने का है. ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, एग्जांपल ऑफ सोच एसोसिएशंस आर. तो वो जो एसोसिएशन है, या फिर अभी जो हमने बोला इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ए रॉक के साथ पी मिनरल, बी के साथ क्यू, तो एक्चुअली में ये रॉक क्या है और ये मिनरल क्या है, उसी का एग्जांपल हम अभी देखेंगे वन बाय वन. सो लेट्स सी इग्नियस रॉक्स एसोसिएटेड विद द ओर. सो अगर आप बात करो किम्बरलाइट, आप सबको पता है किम्बरलाइट अकर एज अ पाइप. व्हेन विल सी द डायमंड डिपॉजिट इन दैट प्लेस, विल सी क्लोजली व्हाट इज किम्बरलाइट. एंड किम्बरलाइट क्या आप सभी को पता ही होगा. सो जब हम इंडिविजुअल मिनरल को डिस्क्राइब करेंगे तो और भी डिटेल में हम देखेंगे. बट हियर फॉर योर kind information, for example we can say always you will see diamond occur with the kimberlite if you will get kimberlite in any rock. Okay, but yes, if आप उसको like आफ्टर सेडिमेंटेशन प्लासर डिपॉजिट में आपको मिल रहा है या फिर इन सेडिमेंट मिल रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट केस. बट इफ यू आर गेटिंग इट विथ igneous rock, that means it is somehow associated with the kimberlite pipe. Okay, और स्पेशली विद द हेड पार्ट, किम्बरलाइट का भी हेड रहता है, बॉडी रहता है. ओके, so if this is the kimberlite part, kimberlite rock, so in head part only you will get the diamond. And but now if you are going to search in the head part of the kimberlite, it is completely eroded. Means ये इरोड होके चला गया, कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट हो गया है. तो आपको एज ए सेडिमेंट
डिपॉजिट आपको डायमंड मिलता है। ओके, बट इट इज नॉट ओरिजिनली फॉर्म्ड लाइक सेडिमेंटेशन की वजह से ये बना नहीं है, इग्नियस प्रोसेस से ये बना, बट आज सेडिमेंट ये ट्रांसपोर्टेशन इरोजन होके आगे कहीं जाके डिपॉजिट हो गया है। सो एग्जांपल आप बोल सकते हो आजरा करूर आंध्र प्रदेश में किम्बरलाइट है, पन्ना मध्य प्रदेश में आपको किम्बरलाइट पाइप वगैरह दिखता है, तो इन दैट नियर बाई एरिया यू आर गेटिंग दोज काइंड ऑफ minerals, those kind means the diamond. Again, the ultra basic intrusive like peridotite, pyroxene, dunite, this is very famous for chromite. So chromite deposit will always occur with the ultra basic rock, okay, or ultra mafic rock. So the example is Zozo Hatu. So now this is coming under Jharkhand. Okay. In old literature, old book, you will see it is written as Bihar because previously it was united. But later on, Jharkhand is separated from the where you all know the history. So I am not going to that, but yes. Now it is considered as a in Jharkhand Zozo Hatu and Nuasai Keonzar you will get uh, chromite again Sukinda which is the world famous deposit and Cuttack Odisha Dras Ladakh in this area you will get the chromite deposit which is associated with देखो क्रोमाइट जहाँ पर भी मिला इंडिया में और यू कैन से डायमंड जहाँ पर भी इंडिया में मिला किम्बरलाइट के आसपास ही मिला या फिर किम्बरलाइट रॉक में ही मिला दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या है जब आप जियोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आता है देयर इज अ स्टेबिलिटी जोन ऑफ डायमंड ओके ऑल द थिंग्स आर देयर। Similarly, whenever you are getting a chromite rock in this area, you will see the country rock, the surrounding rock, the nearby rock is nothing but the ultra basic intrusive like periotite, pyroxene, dunite. That means always you will get chromite with the ultra basic rock. Then next you have the gabbro and anorthosite. Gabbro anorthosite में क्या हो रहा है तो टिटानीफेरस मैग्नेटाइट यू विल गेट। तो यहाँ पर और क्या मिल रहा है मैग्नेटाइट का मैग्नेटाइट और विच इज somehow enriched with the titanium. So titaniferous magnetite ore. Okay, magnetite is nothing but the ore of iron and you are getting titanium. So here we are saying titaniferous magnetite. Example Bisoi, Rairangpur. This is also located in the Mayurbhanj, Odisha. So this is seen with the gabbro and anorthosite rock. So you can say there is a relation or genetic relation between magnetite and gabbro and anorthosite rock. Okay, means magnet titaniferous magnetite is a ore and gabbro anorthosite is a rock. Genetically they are related. Again nepheline cyanide you will get the corundum. Corundum क्या आप सभी को पता है, अगर आप हार्डनेस स्केल पढ़े हो तो और भी अच्छे से आपको पता होगा। ओके, देन एग्जांपल इज खमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी अगर आप अच्छे से देखते हो तो खमाम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिलता है एंड दिस इज नाउ इन आंध्र प्रदेश नो देन वेयर इट इज इन योर तेलंगाना राइट। Similarly, you have the granite and granitic pegmatites. These are somehow related to the ore like tin tungsten जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। अगेन यू हैव द यूरानियम। तो ये देखो जब हम बोलते हैं ना जादूगुड़ा और झारखंड जो हमारा सिंगभूम है, सिंगभूम क्या है, सिंगभूम जो हम ग्रानाइट बोलते हैं दिस इज नथिंग बट अ क्राटोन। क्राटोन क्या है older stable land mass which is igneous body. So this is nothing but in composition granitic to granodioritic. Okay, तो granitic felsic composition है। Okay, that means with granite rock or granitic or you can say felsic rock pegmatite is very coarse grain. Okay, so you will get this kind of ore. Why? Because when you will see the geochemistry LILE HFSC, okay, then compatibility you will if you will see the concept of compatibility incompatibility LIL HFSC then only you will get okay. So a few examples like tin mineral is cassiterite you will get in Koraput Odisha, okay, and some part of in Chhattisgarh, then Tosam of Haryana. Again you have the tungsten
इन टंगस्टन यू आर गेटिंग विथ क्वार्ट्ज एंड पेगमाटाइट वेन्स, तो टंगस्टन आपको वेन में ही मिलते हैं ऑफ क्वार्ट्ज एंड पेगमाटाइट, 8 देगाना सिरोही राजस्थान। ओके, देन यूरानियम ग्रेनाइट इंट्रूसिव, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगभूम कपर बेल्ट झारखंड के रीजन में ही मिलता है। हमने एक शेयर जोन का इमेज देखा था, अलोंग दैट यू हमने देखा था कि कहीं ना कहीं यूरानियम भी उसमें मिलता है विद द यूरानियम। हमने कॉपर डिपॉजिट देखा था, बट एसोसिएटेड इन दोज रीजन यू विल गेट यूरानियम एंड अदर टीन टंगस्टन different kind of minerals. So these things we have seen earlier. So now coming to the next small topic, which is the pathfinder element. So what is the meaning of pathfinder element? Sometimes it is also called as a indicator, मीन्स somehow it is indicating you, but ये क्या indicate कर रहा है? या फिर pathfinder means this is giving you a clue, hint about some element. So वो element क्या है? That is main concern for us. It may be gold, it may be silver, it may be iron, anything, any kind of mineral which we are concerning, which we are focusing. For that particular minerals, we have certain type of pathfinder or indicating material, indicating element. Okay, मीन्स अगर आपको गोल्ड देखना है, गोल्ड खोजना है, डायरेक्टली तो आपको गोल्ड नहीं मिलेगा ना। अभी जहाँ पर भी गोल्ड मिल रहा है या फिर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं था कि इनिशियली ही उनको गोल्ड मिल गया। दे डिड द एक्सप्लोरेशन, उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, उन्होंने उस एरिया का सॉइल सैम्पलिंग किया, सेडिमेंट सैम्पलिंग किया, वाटर सैम्पलिंग किया, उनको कुछ एनोमली दिखा, देन ओनली दे कन्फर्म दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल्ड है, देन दे स्टार्टेड सर्चिंग, तभी उनको मिला। ऐसा नहीं कि आपको अचानक से आप जाओ आपको गोल्ड दिखेगा, नो, दिस इज नॉट right way. Okay, so pathfinder is somehow like indicator element, or indicator यही है, indicator element है that occur with or near an ore deposit। तो सपोज एक और डिपॉजिट है गोल्ड का जिसको आप खोज रहे हो। गोल्ड में क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि जब बात आता है गोल्ड डायमंड, मीन्स यू विल गेट मोर अट्रैक्टेड। आपका अगर मन नहीं भी होगा तो आप सुनोगे अरे यहाँ पर गोल्ड का बात हो रहा है, सो आई एम सेइंग गोल्ड रादर देन कॉपर आयरन। ओके, बिकॉज गोल्ड इज मोर प्रीसियस, दे आर easier to detect than the main ore body। सपोज यहाँ पर गोल्ड है यहाँ पे, बट दिस इज योर सरफेस, तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, but there is a certain kind of element you will get in the nearby area। Okay, if you will getting that, that means you can get a clue, or you are in a position to say that there is a deposit of gold, we need to search। okay, sorry यहाँ पे मैं AG लिखा हूँ, AU होगा। okay, AG means silver। डिटेक्ट देन द मेन और बॉडी, तो यहाँ पर वो डिटेक्ट करने के लिए आपको एक एज अ एक क्लू वो हिंट देता है, ठीक है। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? शो द प्रेजेंस ऑफ हिडन और स्मॉल ओवर डिपॉजिट, ये आप सभी को पता है, एंड हेल्प जियोलॉजिस्ट ट्रेस द पाथ टुवर्ड्स द मेन और बॉडी, तो हेल्प करता है कि आपको मेन और बॉडी का पाथ को ट्रेस करने में। यूज्ड इन जियोकेमिकल सर्वे लाइक सॉइल, स्ट्रीम, सेडिमेंट, रॉक। ये क्या, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। देन दे डू नॉट रिप्लेस द ओर बट एक्ट एज अ क्लू, तो ये ओर को रिप्लेस नहीं करता है बट एक्ट एज अ क्लू। तो सेम चीज यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं। इट इज अ, यू कैन से इन सिंपल, इट इज अ पाथ फाइंडर एलिमेंट और इट इज अ इंडिकेटर, दैट्स इट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस टॉपिक? बिकॉज समटाइम्स इन क्वेश्चन लाइक गेट, jam or other competitive exam you will get like you have to find in the MCQ, they will give a few or name, and which will give the clue for this element, or which is the pathfinder element of particular this ore. So you need to know, that's the reason I am saying। okay, so ये कहाँ पर मिलेगा? ठीक है, अब तो हम समझ गए पाथफाइंडर क्या है या फिर इंडिकेटर एलिमेंट क्या है, बट वेयर यू विल गेट दिस, हाउ यू विल गेट दिस? ठीक है, ये मेन कंसर्न है कि हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो लेट मी टेल यू, वही एग्जांपल लेंगे गोल्ड का, सो दैट आपको भी इंटरेस्ट आए, लगे कि हाँ गोल्ड एक प्रीशियस चीज़ है, सुनना चाहिए, ठीक है। सो इफ दिस इज द सरफेस, समवेयर हियर यू आर गेटिंग गोल्ड। ओके, बट यहाँ पर गोल्ड वो तो बहुत पास्ट में डिपॉजिट हो गया, ये सरफेस है, यहाँ पर सॉइल वगैरह, आपका रोड वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो
when you are doing the sampling in the nearby area, यहाँ पर आपने soil sample लिया, यहाँ पर soil sample लिया, ठीक है, not only soil sample, sometimes you will see in some area streams are flowing, suppose यहाँ से एक stream flow करके जा रहा है, या फिर एक और बॉडी यहाँ पर टच है। अब आपको तो दिखेगा नहीं, अब इतना तो सरफेस पे टच नहीं रहता है कि एक्सपोजर में, जस्ट आपको बताने के लिए, सपोज दिस इज अ सरफेस, यहाँ पर एक और बॉडी है, सम स्ट्रीम्स आर रनिंग बाय हियर। सो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट यहाँ से लेके जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि वो गोल्ड, इट में टेक गोल्ड, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द गोल्ड, वी आर फोकसिंग ऑन द पाथ फाइंडर एलिमेंट। अब पाथ फाइंडर एलिमेंट किसका क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। सपोज गोल्ड का पाथ फाइंडर एलिमेंट क्या है, आर्सेनिक। दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग आर्सेनिक इन एनी सॉइल सैंपल, आर्सेनिक का भी एक लेवल है, सपोज आई विल से कि एक सॉइल में वो, सपोज दिस इज नॉट एक्यूरेट, जस्ट मैं बोल रहा हूँ आपको एक इमेजिन करने के लिए कि 0.1 ppm नॉर्मल है, बट इन some area or in some soil when you did the sampling you got 10 ppm arsenic is there. Just for your understanding I am saying these figures, but these are not accurate. That means you are getting a hint there is a increase or there is a positive anomaly of arsenic. That means if I will search or if I will search in this area for the gold, I may get, there is a possibility, you may get, you may not get. Okay, so this is how you are doing. So not only in soil sample, maybe in groundwater sample you may get, maybe stream sediment, suppose stream is going from this area, I am doing it in other colors, suppose this stream is running from this area, and if you collect the stream sediments, if it is eroding some part, you will get, okay. Then rock surrounding this deposit, suppose this is rock surrounding the gold, and in this rock also you will get those indicator elements. Okay, so from where these indicator elements come, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, इंडिकेटर एलिमेंट। बट यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप देखते हो नेचर में, मैं गोल्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, गोल्ड बनता है along with the gold you will get arsenic, means जब हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आता है, so that not only contain gold but also contain arsenic, so that means, तो गोल्ड तो एक जगह पे डिपॉजिट हो गया, बट नियर बाई एरिया में आर्सेनिक भी तो आपको मिलेगा ना, बिकॉज हाइड्रोथर्मल फ्लूइड तो आ रहा है, वो तो ऐसा नहीं कि सब एक ही जगह पे गोल्ड, तुम गोल्ड हो तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाओ, आर्सेनिक यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके डिपॉजिट करेगा। सो this is genetically when you are getting gold or when you are getting a particular type of mineral, तो जेनेटिकली उसके साथ कुछ पाथ फाइंडर एलिमेंट भी रहते हैं, ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ डिपोजिशन, एट दैट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, सो दैट यू आर सेइंग these as a pathfinder element. So I think now you are very much clear about the topic, so let me tell you few examples like main ore, ठीक है, मेन ore के साथ कुछ पाथफाइंडर गोल्ड का क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मुथ है, टंगस्टन है, एंड मर्क्यूरी। इफ यू आर गेटिंग these elements in a soil sample in more than, suppose actually it need to be 10 unit, but if it is showing 20-30, that means it is in huge quantity, so it is giving you a hint this is a pathfinder for gold. So you may search for gold, you may go for gold exploration if everything suitable as per your exploration strategy. Okay, then for copper you have the molybdenum, zinc, lead, silver, actually these all are associated together, so we are taking it as a pathfinder elements when it forms ना, जब ये बनता है नेचर में, तो इसके साथ नॉट ओनली, अब जब बोलते हो कि मे बी इट is formed from the hydrothermal fluid or igneous activity, sedimentary activity, so हमेशा ये एक एलिमेंट नहीं बनेगा, इसके साथ अदर कुछ एसोसिएटेड ट्रेस अमाउंट में अदर एलिमेंट भी मिलते हैं, सो वो आपको हिंट देते हैं, ठीक है। अगेन फॉर लीड यू हैव द जिंक, सिल्वर, बैरियम, स्ट्रोंशियम, बट बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में कि गोल्ड का क्या है, तो आर्सेनिक, try to remember, and other also, but arsenic, antimony, bismuth, these are most important. Again for copper, molybdenum, zinc, lead, these are important. Okay, then for lead, these are the pathfinder. Zinc, your lead means, or if you see zinc में भी आपको यहाँ lead दिख रहा है, lead में zinc दिख रहा है, copper में भी आपको zinc दिख रहा है, means these all are associated. Okay, देन कोडियम, सिल्वर, कॉपर, टीन के लिए आपको
टंगस्टन बिस्मुथ, ये टीन के लिए टंगस्टन बिस्मुथ, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा याद रखना है। ओके, other pathfinder for uranium you will get vanadium, सेलेनियम, मोलिब्डेनम। ओके, अगेन फॉर निकल, निकल के साथ कोबाल्ट, ये आपको याद रखना है, ये फॉर निकल कोबाल्ट एंड यूरानियम, वैनेडियम, सेलेनियम, ये सब, मोलिब्डेनम। Then for diamond you will get chromium, nickel. Why chromium? Because when you are saying about the kimberlite, इसका kimberlite composition में ही कहीं ना कहीं chromium भी रहता है। Again manganese. Okay, these are indicator of kimberlite. So if you are getting the kimberlite, that means you will get the diamond, because we have seen in the igneous association. And next here is molybdenum. Here you will get the pathfinder elements like copper, tungsten, fluorine, okay, and bismuth. This is all about the pathfinder and igneous rock association. If you have any doubt regarding this topic, actually this is a very short topic, I explained it in detail so that you can understand and try to remember just basic things, not all the pathfinder elements, just basic pathfinder elements which have been asked in the last 5 to 10 years exams. So thank you all for watching. If you have any doubt, then feel free to ask in the comment.